weapons which have the Chinese markings all over the place, and we feel that we've got, these must have been from across the border. Colonel Fernandez, you have a rare assortment of captured weapons here. Would you like to describe some of this for us? Yeah, I'd like to tell you we've captured all types of weapons, starting off from automatics, semi-automatics, single shots, weapons, sort of assorted weapons which were of foreign origin, or weapons which were held by our neighboring countries, and also some of our own weapons which have been probably picked up by some of these boys some time ago. Now I'd like to tell you that some of the weapons which we recovered are first of all, the AK-47. That has got a Chinese marking here, and these are deadly weapons. This weapon is foolproof. There are hardly any stoppages and have a very high rate of fire. What's the rate of fire? Well, this moment I can tell you that they fired a magazine of about 30 rounds in practically less than about half a minute or so. I think that was deadly it was. Then they did have a silencer S10. I think this is where they did most of their pooping off of the individuals whenever they felt like doing it. We've got an anti-tank weapon, and this is an RPG type. It hasn't got the markings are not there very clearly. Can you guess which country? It again seems to be both Chinese, because this was some of the weapons which were there earlier. But it has its shoulder fired, and it has a smooth bore. It's an anti-tank weapon. Weapons for the snipers with telescopic sights. Well, pick us up anytime we felt like picking us up. Then there were the automatics, these light machine guns. Plenty of them. Well, here only some of them we've recovered, and we're still recovering. We're in the process of recovering practically at one of these rooms per day. Now, how do you think they got here? Do they come via Pakistan, these Chinese rifles? There definitely seem to be been some gun running somewhere, because we've got information that there were some guys who used to get across these weapons and keep bringing it out here. But the way they got these consignments, my God, they must have got them in some big way or the other. I'd like to show you something more interesting, is these hand grenades, homemade hand grenades which they made. They were deadly weapons. I'll just show you some of them. And these weapons were ordinary, the machine which they use for threshing. Yes. They sort of wound around some plastic explosives, had a detonator, and they just threw it. And this was far more devastating than our 36 hand grenade. What distance could that be thrown? Well, it could be thrown the same distance if it was say 30 yards or so, but still, I say those things caused maximum casualties. They kept on getting out of the manhole, throwing those things and getting down and back, and that's what happened, I think. And I think that's the crudest bomb. Then they literally went to the extent of manufacturing grenades. I'll show you some of the manufacturing. I mean, we've got them in the process of the manufacturing thing. We've got them in the first mold, the second mold, and the final finished product. They're crude. Then remember I showed you the training grenade when we were coming across. That was one thing which was there. Then they had, to some extent, they had plenty of explosives. They had detonators which various time fuses. From 2 seconds to 4 seconds and 7 seconds. But were all these weapons produced within the complex or outside? Well, it was within the complex, because these have been practically recovered from within the complex. This is one. This is some of the manufactured ones within the complex. 47 self-loading rifles, 247 303 rifles, 66 single तथा डबल बैरल गन्स, 11 मजल टाइप राइफल्स, 26 अन्य प्रकार की बंदूकें, 9 कार्बाइन्स, 74 रिवॉल्वर्स और पिस्तौलें, 1 रॉकेट लॉन्चर और 61 हथगोले। हमारी कैमरा टीम कल अमृतसर गई थी। पेश है उसी की एक रिपोर्ट।
ये बताइए, यहाँ पे ग्रेनेड बनाने की मशीनरी रखी हुई है, तो कैसे इन्होंने बनवाया है इसको? ये तो आप सामने देख सकते हैं कि ये ग्रेनेड्स हैं, ये डिफरेंट किस्म के ग्रेनेड हैं, ये दूसरी किस्म के ग्रेनेड हैं जो कि आर्मी ग्रेनेड से रिजेंबल करते हैं। तो ये तो हमें नहीं मालूम टेक्निकल तरीके से कि ये कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन हमने तो इसको सिर्फ पकड़ा है। और जब हम इसके अंदर हमको इस रूम को क्लियर करना था, उस टाइम ये अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से लॉक हो रखा था। हमने इसको तोड़ा है दरवाजे को। ये जो यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है ये 1/4 है, जो 3/4 सामान है वो हम ऑलरेडी भिजवा चुके हैं, जहाँ की हमने अपने आर्म्स डिपॉजिट किए हैं। ये ग्रेनेड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं है, बल्कि यहाँ दूसरे किस्म के हथियार भी बनते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये LMG के ब्रीच ब्लॉक। अच्छा, ये LMG के ब्रीच ब्लॉक भी यहीं बनाते थे? यहीं बनाते हैं। तो जरा दिखाइए उनको। इसके अलावा ये पिस्टल, ये देखिए क्रूड फॉर्म है इसकी, ये भी यहीं बनाए जाते हैं। इस तरह की हमने 20-25 पिस्टल्स डिपॉजिट भी कर दी हैं। इसके अलावा राइफल्स, 12 बोर राइफल्स, कुछ तो फॉर्मेटिव स्टेज में थी, वो भी हमने डिपॉजिट कर दी है। ये अकाल तख्त के पीछे का कुआं है, जिसमें से अभी तक हमको बहुत सारे वेपन्स, सोना, करेंसी और बहुत सारी इक्विपमेंट भी जो है बरामद हो चुकी है। पहले हमारी एक इन्फेंट्री बटालियन थी, उन्होंने इस कुएं के अंदर से वो खूंटी लगा के सामान निकाला था। तकरीबन 70 वेपन निकले थे, जिसमें से 32-33 LMG थी। उसके अलावा एक ट्रांसमीटर निकला। इसका मतलब यहाँ पर इनका कोई ट्रांसमिटिंग स्टेशन भी था। अभी जब ये काम पूरा नहीं हुआ हमसे, तो हमने नेवल डाइवर्स को रिक्विजिशन किया है, वो आज यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप उधर देख सकते हैं कि कितनी इक्विपमेंट उन्होंने आज इसके अंदर से अभी तक निकाली। ये 10 जून तक हमने इस कुआं से 24 LMG और 30 SLR, 119.303 राइफल निकाला था। आज सवेरे से लेके नेवल डाइवर्स आने की वजह से हमने 9 SLR, 52 राइफल्स और बाकी सारे रिवॉल्वर, पिस्टल्स जो निकाला है, और MMG का बेल्ट्स भी काफी हमने निकाला है। कल हमने एक रिसीवर निकाला था, एम्पलीफायर ट्यूनर यूनिट निकाला था, पावर सप्लाई यूनिट निकाला था और फ्रीक्वेंसी मैचिंग सेट मेड इन जापान निकाला था। आज ये ट्रांस रिसीवर हाई फ्रीक्वेंसी मेड इन जापान निकाला है। ये साइलेंसर हैं जो कि पिस्टल के साथ जोड़ के फायर किया जाता है, और इसके पिस्टल के साथ इसको जोड़ के फायर कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, जो कि बारूद, कोई एक्सप्लोजन के काम में ये लाया जाता है। आश्चर्य तो इस बात का है कि स्वर्ण मंदिर में इतनी भारी मात्रा में चीन, पाकिस्तान और कुछ पश्चिमी देशों में बने हुए आधुनिक हथियार आए कैसे। इनमें से अनेक हथियार ऐसे हैं जो पाकिस्तान के मुजाहिदीन द्वारा अफगानिस्तान के विरुद्ध इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो मीडियम मशीन गन्स पकड़ी गई हैं, वे इतनी शक्तिशाली हैं कि 800 मीटर तक मार कर सकती हैं और 1 मिनट में 800 गोले बरसा सकती हैं। अभी आपने दूरदर्शन की रिपोर्ट देखी।